Greetings of the day to everyone. Today I am going to discuss a important news, but this is an unfortunate news as well. Some of the elephants in a tiger reserve has died. Now they have consumed something which has led to their life being taken. What was the thing? What was the reason behind the death? Where this incident has happened place? We will discuss that in absolute precise detail. Okay, now let us start with it. Elephants' deaths linked to toxic kudo millet in India. Now understand, this is a very important news. Some of the elephants have died. Now why they have died? They have consumed a millet called as kudo millet. Okay, they have consumed a millet called as kudo millet. Now where this incident has taken place, how many elephants have died? 10 wildlife elephants from a herd of 13 have died in Madhya Pradesh Bandhavgarh Tiger Reserve. So in Madhya Pradesh there is a tiger reserve called as Bandhavgarh Tiger Reserve, and there were a group of 13 elephants, and out of those 13 elephants 10 elephants have died. Okay, so this incident took place in MP Bandhavgarh Tiger Reserve. 13 elephants were there and 10 have died. Now the cause is suspected to be mycotoxins from kudo millet. Now why they have died? They have died because they have consumed kudo millet and mycotoxin, a harmful substance, has entered their body. Now this incident marks the dangers of kudo millet and its potential toxicity. This incident very clearly suggests that this kudo millet, a kind of millet, is very dangerous for health and it can take lives. 10 elephant dying is a huge matter or huge concern of importance, like that has to be taken into consideration. Now moving further, what is kudo millet? Understand, kudo millet, scientifically known as Paspalum scrobium culatum. Paspalum scrobium culatum. What is kudo millet scientifically called as? It is called as Paspalum scrobium culatum. Is a typical type of grain grown in India and several other countries. It's a type of grain that is grown in India. Okay, Paspalum scrobium culatum is a grain grown in India and various other countries. Okay, and it is also called as kudra and vargu. Okay, it is also called as what? Kudra and vargu. Madhya Pradesh is the largest producer of kudo millet in India. Which state is the largest producer of kudo millet? Madhya Pradesh is the largest producer of kudo millet in India. Now, in what kind of climatic condition does kudo millet grow? Kudo millet grows in tropical and subtropical climatic condition, often in poor soils. So it grows in tropical climatic condition and subtropical climatic condition, often in poor soils. Okay, so one thing is very clear. Out of 13 elephant in Bandhavgarh Tiger Reserve in Madhya Pradesh, 10 elephant from that group of 13 has passed away because they have consumed this millet called as kudo millet. And in that kudo millet there was a harmful chemical substances called as mycotoxin. Now this kudo millet is scientifically called as Paspalum scrobium culatum. What it is called as Paspalum scrobium culatum is the scientific name of kudo millet, and in local language it is called as kudra and vargu. Okay, kudo millet is largely grown in Madhya Pradesh and it's the largest producer, and basically it is grown in tropical and subtropical type of climate, and it is not requiring a fertile soil. Now let us move further. Then even if we are supposed to now understand this kudo millet is a harmful substance for health, then why do the people or why do the farmers still grow this kudo millet? Understand, there is a reason behind it. Kudo millet is a staple food for many tribal communities. Many tribal communities still consumes this kudo millet, and it is drought tolerant and has a high yield potential. So
basically much water is not needed for this crop, and it has a high yield potential, and it acts as a staple food for many tribal population. Now you will ask, won't this affect the tribal population? It is not necessarily affecting all kinds of population or all kinds of life. There might be a chance here or there few lives are taken by consuming this millet, but it's not necessary that whoever consumes it will die. No, it's not that case. Okay, now the grain is rich in vitamins, minerals, and dietary fiber. Grain is good in the aspect of vitamins, minerals, and dietary fibers, but the thing is that it consists of mycotoxin, which is a harmful substance. Okay, and that mycotoxin does not affect all the millets. सारे millets में नहीं होते, सारे कूड़ो millets में नहीं होते, कुछ ही में होते हैं जो वो जो वो कूड़ो millets खाता है और उसको दिक्कत होती है जहां पे mycotoxins है. It is gluten free and easy to digest, making it as a healthy choice. So understand, kudo millet has kudo millet has vitamins, minerals, and dietary fibers. Okay, kudo millets में vitamins है, minerals है, dietary fibers है, gluten free भी है और easy to digest भी है. But problem क्या है? mycotoxin, जो कि कुछ कूड़ो मिलेट्स में है और जो उस कूड़ो मिलेट्स को कंज्यूम करता है उनकी मौत हो जाती है. अब क्या ये पहला केस है कूडो मिलेट से किसी की डेथ हो रही है? द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ कूडो मिलेट पॉइजनिंग डेट्स बैक टू 1922. 1922 में कूडो मिलेट्स का पहला केस देखा गया था. 4 इंडिविजुअल बिकेम अनकॉन्शियस आफ्टर कंज्यूमिंग अ ब्रेड मेड अप ऑफ कूडो मिलेट फ्लोर. 4 लोग कूडो मिलेट से बने हुए फ्लोर, कूडो मिलेट का जो आटा है उससे बने हुए ब्रेड को खाकर 4 लोग बेहोश हो गए. The first animal case was reported same year. 1922 में ही पहली बार एक एनिमल की भी मृत्यु होती है कूडो मिलेट खाकर, इन्वॉल्विंग अ डॉग दैट एट कूडो ब्रेड. एक डॉग ने खाया था कूडो मिलेट को और उसकी मृत्यु हुई थी. वो कूडो ब्रेड के तौर पर खाया था, कूडो मिलेट से बने हुए आटे को प्रोसेस करके ब्रेड बनाया था. उस ब्रेड को खाने के बाद एक डॉग की डेथ हुई थी. Research in the mid 1980s linked kudo millet to mycotoxins, particularly cyclopasionic acid. तो जो 1980s में रिसर्च हुआ था उससे ये पता चला कि कूडो मिलेट में माइकोटॉक्सिन्स है कुछ कूडो मिलेट में, और उसके वजह से ही लोगों की जान जाती है, एनिमल्स की जान जाती है. तो ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो केसेस हुए हैं वो पहली बार हो रहा है. 1922 में भी ह्यूमन्स लाइफ्स वर टेकन, ह्यूमन फेल्ट अनकॉन्शियस. उसी साल डॉग को ये इफेक्ट किया गया है. सो कूडो मिलेट्स लाइफ टेकिंग स्टोरी हैज नॉट अ रीसेंट फिनोमेना, इट हैज बीन फ्रॉम द पास्ट. Now we will move further. How does kudo millet become poisonous? See, kudo millet is often grown in dry areas, जहाँ पे क्योंकि drought resistant crop है, dry areas में grow होता है, but can be infected with fungi and under certain conditions. अब kudo millet जो dry areas में grow हो रहा है, इसको क्या infect करता है? फंगाई इन्फेक्ट करता है, फंगाई इन्फेक्ट करता है और सर्टेन कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन लीड्स टू माइकोटॉक्सिन प्रोडक्शन. अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है उसके वजह से माइकोटॉक्सिन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, विच इज हार्मफुल. अब कूडो मिलेट जो है सर्टेन ड्राई कंडीशन, यूजुअली ड्राई कंडीशन में फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, बट कूडो मिलेट को सब कभी कभी क्या होता है, ड्राई कंडीशन में फंगल अटैक होता है जिसके वजह से माइकोटॉक्सिन का रिलीज होता है और उसी माइकोटॉक्सिन की वजह से क्या होता है, लोगों की जान जाती है, एनिमल्स की जान जाती है. ठीक है. कूडो पॉइजनिंग अफेक्ट्स द नर्वस एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कौन कौन से सिस्टम को इफेक्ट करता है? एक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करता है. सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, जिडनेस, अनकॉन्शियसनेस, ये सब होते हैं. नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपको वॉमिटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस होता है, आपको चक्कर आते हैं, ये सारा इसका केस है. इन एलिफेंट दिस सिम्टम्स वर ऑब्जर्व्ड इन रीसेंट केसेस. नाउ एलिफेंट में ये सिम्टम्स रीसेंट केसेस में देखा गया है. टॉक्सिसिटी कैन लीड टू सीवियर हेल्थ इश्यूज इंक्लूडिंग लिवर डिसफंक्शनल एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स. देखो, कूडो मिलेट्स के खाने से या कंज्यूम करने से, क्योंकि उसमें माइकोटॉक्सिन है जो कि एक फंगस अटैक के वजह से, कूडो मिलेट को फंगस अटैक करने के वजह से हुआ है. अब उसको खाने से आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज, नर्वस डिसऑर्डर्स, लिवर फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज सब हो सकता है. 1922 में ह्यूमन को कूडो मिलेट ने पहली बार अटैक किया था. कूडो मिलेट के केस,
कूडो मिलेट को कंज्यूम करने के बाद उन ह्यूमंस को अनईजीनेस या अनकॉन्शियस हो गए थे वो। उसी साल एक डॉग को ये एक कूडो मिलेट से बने हुए ब्रेड को खाने से दिक्कत हुई थी। द रीसेंट इंसिडेंट विच हैज टेकन प्लेस इन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश पे 10 elephants has lost their lives out of the herd of 13 is a very unfortunate incident. Now what farmers can do is farmers has to store this kudo millets in a proper storage where the fungus don't attack it, and they have to adopt very good agriculture practices so in order to avoid this infection. See, understand, I do understand it is a very important crop for several tribal groups where it is a staple food for them. I do understand it is a drought resistant crop, and the productivity, the yielding capacity is much greater. But understand, the life of individuals, the life of animals is much more important than productivity, than like having a drought resistant crop. We have to find an alternative in order to combat the situation. That's all for the day. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Stay safe.